Hello students, I hope you all are fine. Students, you know very well, we are doing the unit thermodynamics. We have already studied about the first law of thermodynamics. Today we will discuss about second law of thermodynamics. So, what is the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics is based on the energy. Means law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form only. This was the first law of the thermodynamics. Today we will discuss about second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics, it is based on the entropy. First law was based on the energy, but here second law of thermodynamics, it is based on the entropy. Okay students, so what does this law states? It introduced the principle increase in entropy in spontaneous process. This law states that entropy of a spontaneous process increases continuously. Entropy of the spontaneous process increases continuously. So what do you mean by entropy? In previous class we have discussed about the entropy. Entropy means randomness, freedom of the system. Means how freely it can move. That is entropy. Okay. So second law of thermodynamics is saying that entropy of the universe increase continuously as a result of the spontaneous process. You know very well. Students, there are some natural phenomena, and all natural phenomena are spontaneous because they need not any external energy for processing. So those process who take place yourself, it shall take place. They need not any external agency for processing. Okay, need not any initiation for processing. Those process are known as the spontaneous process. मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, बाहर से हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी उनको नहीं देनी पड़ती, बाहर से कोई असिस्टेंट हमें नहीं देनी पड़ती, कोई हीट नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, वो अपने आप से ही प्रोसेस होते रहते हैं. Those process are the spontaneous process. So second law of thermodynamics क्या कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी मीन फ्रीडम, रैंडमनेस, कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज. कब? एज ए रिजल्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मीन्स हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैं जो अपने आप ही अक्सर होते रहते हैं. बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी की, बाहर से एक्सटर्नल हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की हमें नीड नहीं है, जरूरत नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सेल्फ प्रोसीड होते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज. और ये किसने कहा? दिस वाज स्टेटेड बाय सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. So what is the second law of thermodynamics students? Entropy of universe increase continuously. यूनिवर्स की एंट्रोपी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, मीन स्टूडेंट्स ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल. All spontaneous process like evaporation of water, it is also a spontaneous process. Okay students, if I pour one glass of the water at the floor, so it will take some time. After some time it get evaporated. So we need not to provide any external energy for evaporation. So this is a spontaneous process. Okay students, it cannot be reversed until we provide any external agency.
Okay, without any external agency, spontaneous process cannot be reversed. Means basically all spontaneous processes are irreversible. Without help of an external agency, a spontaneous process cannot be reversed. For example, student, पेड़ से पत्ते का गिरना, falling leaves from a tree. This is a spontaneous process. This is a spontaneous process. पत्ता पेड़ से गिर जाता है, that is a spontaneous process. Okay, but student, अगर हम उसको रिवर्स करना चाहें, क्या वो अपने आप ऐसे ही जाके चिपक जाएगा? No, it cannot. Okay, because it is a irreversible process. बट अगर हम उसे उठाएंगे और उसको हमने पेस्ट कर देना है किसी ब्रांच पर, तो वो, क्योंकि वो हमने एक एक्सटर्नल एजेंसी का वहां पर काम किया है जिससे हम उसको रिवर्स कर पा रहे हैं. अदरवाइज विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी, spontaneous process cannot be reversed. They are the irreversible. Okay, I hope it is clear to you. So student, this was the first definition for second law of the thermodynamics. Some other definition was also given by other scientists. So see, second one is the Clausius statement. What does this statement state? It is impossible to spontaneous flow of heat from colder body to hotter body. Students, you know very well, heat flow take place from hotter body to colder body. Hotter body to colder body. It is a spontaneous process. But spontaneously, अपने आप, spontaneous means अपने आप, self initiation. ये रिवर्स नहीं हो सकता कि कोल्डर बॉडी से होटर बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं होगी. हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड from colder body to hotter body by spontaneous process. Spontaneously, it cannot be flow from colder body to hotter body. Students, hotter body to colder body heat transfer होती है, ये एक spontaneous process है. बट अगर हम इसका जस्ट रिवर्स करना चाहें कि हमने तो हीट को भाई होटर से कोल्डर तक नहीं लेके जाना, हम तो कोल्डर बॉडी से होटर बॉडी तक ट्रांसफर करेंगे हीट. ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल स्पॉन्टेनियसली ये पॉसिबल नहीं है, अपने आप ऐसा नहीं होगा. क्लियर और नॉट? यस. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, Kelvin Planck statement is that it is impossible to construct a machine which has 100% efficiency. 100% efficiency means हमारे पास ऐसी मशीन को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है कि जो 100 हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हम काम कर रहे हैं किस पर? सिस्टम पर. ओके, और सिस्टम में हमारे पास गैसेस होती हैं, वहां पे हमारी थर्मोडायनेमिक कुछ वेरिएबल्स हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को घटाना बढ़ाना, यही हमारा काम है. ओके, उनको वेरी करवाना ही हमारा काम है. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये इम्पॉसिबल है ऐसी मशीन को कंस्ट्रक्ट करना जो हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, with help of the electricity we run the fan, but 100% efficiently we are not doing the work. You know, after some time our fan
or our electrical appliance get hot. Why it is? Due to heating effect, because some amount of energy is used for doing work, and other energy, it increases entropy of the system. It increases entropy of the system. Okay, means 100% energy is not used for working. It's not used for working. So it is not 100% efficient. It is not 100% efficient. Okay, so students, according to the Kelvin Planck statement, it is impossible, ये impossible है to construct a machine, एक machine को construct करना. What type of machine? Means which has 100% efficiency, जिसकी efficiency 100% है. What do you mean by 100% efficiency? Means 100% heat, means 100% of heat cannot be converted into the work. Clear or not? I hope this statement is also clear to you. Then students, our last statement for second law of thermodynamics is Kelvin statement. This was given by the Kelvin Planck. This is the Kelvin Planck statement. But now we are going to discuss about the Kelvin statement. What does this statement say? It is impossible to obtain work by cooling a body below its lower temperature. Students, every body has its specific temperature, its minimum temperature. But students, केल्विन स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर उसके लोवेस्ट टेम्परेचर से कम कर देते हैं, बिलो देन इट्स लोअर टेम्परेचर, उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है उससे भी अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ओके, तो उससे वर्क करवाना इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन वर्क. ये इम्पॉसिबल है कि हम वर्क करवा पाए बाय कूलिंग अ बॉडी. अगर हम किसी बॉडी को कूल करते हैं, हाउ मच? बिलो इट्स लोअर टेम्परेचर. अगर हम किसी बॉडी को उसके लोअर टेम्परेचर से भी ज्यादा कूल कर देते हैं, उसको डिक्रीज उसके लोअर टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर कर देते हैं, और फिर हम चाहें कि हमें उस बॉडी से काम करवा पाए, वर्क करवाएं, सो इट इज impossible. It is impossible. Okay students, so this is all about the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics means it is based on entropy. It is based on entropy. Means entropy of universe is continuously increasing in case of spontaneous process. Okay, all spontaneous processes are irreversible. What does it mean? Means they cannot be reversed without any external agency. Then students, Clausius statement says that it is impossible for a spontaneous process. It is impossible to flow of heat from colder body to hotter body spontaneously. Okay. Then students, according to Kelvin Planck, it is impossible to construct a machine which has 100% efficiency. And according to Kelvin, it is impossible to obtain work by cooling a body below its lower temperature. Okay students, so this is all about the second law of the thermodynamics, and tomorrow we will discuss about the third law of thermodynamics. It is also based on the entropy. Okay students, I hope this topic is clear to you. So thank you, have a nice day.